देखिए लाइव हो गया। लाइव हो गया है, देखो चेक करो। देखो मुझे तो नहीं दिख रहा यूट्यूब पे। आप देख के हाँ आप बताइए। लाइव हो। यस यस आप लाइव हो। चलो कंटिन्यू। ओके हो गया। यस यस आप लाइव हो, आप ऑडिबल भी हो। ठीक अभी आप अपना पीपीटी प्रेजेंट कर सकते ठीक है, हो। थैंक यू। मेरी भी आवाज आ रही Great. Hi guys, good afternoon. So कैट कल है एंड आई नो बहुत ही टेंशन का माहौल है, तो मैं आया हूँ लास्ट मिनट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने। Who am I? Why should you listen to me? I'll tell you everything. And meanwhile, if you have any doubts, you can write in. I'll be more than happy to address. And मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, आपके सामने ही सब लिखूंगा। I want to make it interactive. I want to make sure that everything gets cleared before you enter the exam, before you have a clear mind. So let's jump in. Before that, something about me. Who am I? My name is Hemant Tulsan. I am a BCom honor graduate from St. Xavier's College, Kolkata. मैंने ये same t-shirt पहन रखी है. This is one of my favorite t-shirts. So currently, I am pursuing MBA, PGP batch of 2025 from IIM Kozhikode, and I am an aspiring YouTube creator. मेरा YouTube channel भी है जहाँ मैं cat related videos डालता हूँ, so you can check it out. I am a national finalist of Amazon Ace, so it is a national competition जहाँ 3500 teams ने register किया था. Top 8 teams qualified for national finals, and I had the fortune to fly over to Bangalore in Amazon office, meet a lot of people, and then present my final case submission, जिसका file मेरे हाथ में जो इस फोटो में है. Um, I'll skip the accolades. I'll tell you, I took CAT 3 times in 2020, 2021, and 2022. And these are my percentile: 43, 85.5, and 97.84. I'm a fresher, 887 profile. 887, if you don't know, 10 में 81, 12 में 85, graduation में 72.6. And the highlight has been in my first attempt, I got 10 percentile in DLR. In my second attempt, I got 9 percentile, and in my final attempt this time, I got 98.8. So this is what I very much believe. This is a quote written by me only. Stopping doesn't matter, but what's stopping you does. So if there is something that is stopping you concerning you, I'm here to help you out with it. Before we start, I just want to know, is there anything specific you want me to address, or should we directly jump into the do's and don'ts? I'll wait for 1 minute. Um, ठीक है. Okay. Priyansh, hi. Hi, Priyansh. Have a lot of anxiety. What to do? Fine. Lakshay, can you wear sports shoes? You worked hard, is the anxiety and stress and the fact. Thanks, Lakshay. What to do if we get a lot of self-doubt? Okay, fine. Let me address it. Okay? I'll address your doubts, then I'll go to do's and don'ts. So, as Lakshay said, just because you are expecting some results, you are having anxiety. So it's something good. जो लोग कुछ नहीं करके गए, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि आपने कुछ नहीं किया पूरे साल, आप जाके एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो आपको थोड़ी ना कोई एंग्जाइटी होगी कि आपको पता है कुछ होना तो है नहीं. बट इफ यू हैव वर्कड हार्ड, you had a clear goal, you gave up something for the exam and you went forward with your decision, and now that the day is here, you are feeling a bit anxious, a bit, you would say like क्या होगा कैसा होगा, then obviously there should be
being anxious is actually good because that shows that you have put in the effort. So don't worry about it, Priyansh. सेल्फ डाउट के समय एक चीज करना है यार, जैसे मुझे हुआ था सेल्फ डाउट डीएलआर के समय. टेक अ 1 minute break. See, every minute counts in CAT, I know, but just realize something. If you take a minute's break, you sit with yourself कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है let absorb it down, let it go in, and then you start afresh. तो तुम्हारा आगे का जितना भी टाइम है वो सही होगा. जस्ट बिकॉज उस 1 minute को बचाने के चक्कर में अगर तुम उसी माइंडसेट से आगे बढ़ते रहे, then what will happen is your whole section, whichever you are attempting, will fall down, which you don't certainly want. So I would say take a minute and let your thoughts sink in. Believe that you have done enough. Just recall everything that you have done in those 6 months when you are having self doubt. Recall the expectations that you have from yourself and the people who have faith in you, and you will definitely again get back to the mode of attacking the questions rather than defending from them. तो वो तुम्हारा मेन एम होना चाहिए. हाउ टू मैनेज 5 minutes ऑफ एनी, आई थिंक क्वेश्चन पूरा अच्छे से आया नहीं. ठीक है. लक्ष्य, हाँ स्पोर्ट्स शूज मत पहनना यार, चप्पल पहन के जाओ एकदम नॉर्मल. Be have a very clean attire. So this is the first dose. Have a very simple attire. What I wore normal t-shirt, short cap pant, and slippers. देखो, यू डोंट वांट कि वहां पे जाके तुमको बहुत वेट करना पड़े, या होता है ना बिफोर एग्जाम तुमको कुछ बीटी दिया जाए. सो इफ यू वांट टू अवॉइड दैट, गो इन द मोस्ट सिंपल अटायर पॉसिबल. आई कैन अंडरस्टैंड ठंड हो सकती है, सो वियर अ जैकेट, दे विल टेक अ लुक एट द जैकेट एंड एवरीथिंग, बट आई से avoid belt, any kind of metal. Have as comfortable clothes as possible. As comfortable clothes, please. That is a way, like a big green flag. अगर तुमने अनकंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हैं या कुछ ऐसा पहना है जो थोड़ा देर में एग्जाम में थोड़ा देर जाने के बाद तुमको उससे घुटन होने लग जाए, अच्छा ना लगे, अवॉइड इट. जैकेट जैकेट ले लो यार. सही कहा. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग माय वीआर से. सेका स्कोर मत देखो. सो आई टेल यू व्हाट यू कैन डू टुडे. टेक अ कोल्ड मॉक. अरे यार, कोल्ड मॉक का मतलब क्या होता है? यू जस्ट look at the questions and decide if you will attempt it or not. You don't need to attempt. ठीक है. And what you do is, after you do this exercise, let's say मैं VRC का खोला, मैंने पहला पैसेज देखा. पहला पैसेज मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा 2 मिनट, और फिर मैंने अपने मन में बनाया कि ठीक है, अगर एग्जाम में मुझे ये पैसेज मिलता, मैं ये पैसेज अटेम्प्ट करता कि नहीं. सो देयर कम्स द फर्स्ट फिल्टर कि ठीक है, तुम बोलोगे ये पैसेज मैं अटेम्प्ट करता, फाइन. देन आई विल गो टू द क्वेश्चंस एंड सी कि पहला क्वेश्चन कैसा है. पहला क्वेश्चन इन्फरेंस का है, ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता कि नहीं. ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता, गुड. नहीं करता, ठीक है. तो ऐसे करके देखो. नाउ द एम, व्हाट इज द एम ऑफ इट इज कि व्हेन यू डू दिस, देन यू गो, फॉर एग्जांपल तुम कोई भी अच्छे पोर्टल में जाओगे, वहां पे दिया रहेगा क्वेश्चन का लेवल क्या, वो हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है. ठीक है. तो व्हाट हैपेंस इज, यू डू अ चॉइस. लेट्स से तुमने 22 क्वेश्चंस देखे क्वांट्स के, तुमने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए कि ये क्वेश्चन तुम एग्जाम में पक्का करता है, ये क्वेश्चन शायद नहीं करता. एंड देन यू गो टू, क्या बोलते हैं ना, द पोर्टल, एंड सी कि जो क्वेश्चन तुमने स्किप किए कि नहीं ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करता, वो किस कैटेगरी का क्वेश्चन है. वॉज इट अ हार्ड कैटेगरी क्वेश्चन, मीडियम कैटेगरी, इजी कैटेगरी. तो उससे क्या है, तुमको अपने जजमेंट का पता चलेगा कि ठीक है, I I took the right decision, and that will give you confidence. Also, see one more thing. लास्ट दिन में तुम्हारा स्कोर खराब होने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि तुम्हारा अगर कंसिस्टेंटली 25-28 मार्क्स आ रहा था, एंड लास्ट 2-3-4 मॉक में कुछ भी हो गया, फॉर एनी रीजन मैसअप हुआ,
That doesn't change the fact कि तुम्हारा पहले इतना आया. You were capable enough of getting a consistent score of that much previously, and now just for any reason it is not coming. But you need to keep your calm and you need to realize कि तुम एक दिन किसी एक मॉक में तुम 50 ले आओ वीआरसी में तो तुम उसमें अच्छे नहीं हो जाओगे, और तुम किसी एक मॉक में 10 ले आओ वीआरसी में तो खराब नहीं हो जाओगे. Hmm. I think I was able to answer your question, Priyansh. What was your max mock score before actual CAT? Mm, so my mock score in before actual CAT was almost 65 ka average in full length mocks. I scored 72 marks in CAT and I got 65 ka average throughout. Mm. I hope that answers your question. How to manage first 5 minutes in any section? भाई देखो VRC में तो you don't get a lot of time to observe, like absorb things. I would say in VRC just go in, start and see the first. अगर आपने लोकेश शर्मा सर की क्लास ली है कि नहीं किसकी पता नहीं, but मैंने लोकेश शर्मा सर की ली थी. So when you go into VRC in the first 5 minutes, you just read the first paragraph of the first RC and then the first two lines. Make up your mind if you want to do it or not, and then if you don't want to do it, go to the next RC. वहाँ पे you cannot do anything. In VRC, it's very sorted. You have a strategy in mind, you have to implement it there. In LRDI, in the first 5 minutes, go through all the sets. Go through all the sets, see all the questions. See what are the kind of questions. जैसे for example, if you see that there is one set जिसमें 3 question ठीक है, तो you will kind of understand कि उस सेट का एक ही सोल्यूशन होगा. ठीक है, बट अगर किसी में बहुत सारा इफ है कि इफ ए की जगह बी आ जाएगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, बी की जगह ए आ जाएगा तो क्या होगा, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट विल बी अ लेंथी क्वेश्चन, इट विल बी अ बिट मेस्ड अप. जरूरी नहीं है हार्ड हो, बट इट विल रिक्वायर यू टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस और रीडू द सेट अगेन एंड अगेन. So take a look at the questions and then decide your priority order in those 5 minutes. Go in like if your DILR may you get in the last 1 minute, try not to do anything. Just theta wale question को guess mark करके छोड़ देना. I'll say why. In the last 1 minute, you'll be very tired after VRC and DILR. So in the last 1 minute, just conserve your energy for quants. And when quants come, obviously, if you have the strategy ABC strategy कि पहले इसको करना है, skip वाला जो लेवल ए का क्वेश्चन है वो पहले करना है, बी का बाद में करना है, वो वाला स्ट्रेटजी जैसे भी आपका है, तो क्वांट्स में अगेन see I'll give you some numbers for quants. You need to score around, I would say 24, 24 to 30 to get very good percentile, 95 plus in quants. ठीक है, I think 24 में 96 भी आ सकता है, depends on the obviously paper का toughness. But the thing is, if you see the numbers, if you play by the numbers, what will happen? That 22 quant question, let's say um, you want 24 marks. इसका मतलब you need 8 questions right. ठीक है, 8 questions right. अब तुम क्या करोगे, तुम अगर 9 क्वेश्चन राइट कर रहे हो और 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो तो तुम्हारा काम हो गया, विच इज प्रीटी डिसेंट. ठीक है, मतलब तुम्हारा एक्यूरेसी इज 75% and you are still getting 24 marks. Now what is happening here? For you, 10 questions are not in paper. ठीक है, 10 questions are not in the paper. तो अब तुम्हारे पास कितना चांस है कि तुम 10 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो पेपर में, तुमको 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एंड देन यू कैन डिवाइड योर टाइम. सो 40 मिनट्स डिवाइड बाय 12 इज अराउंड 3 मिनट्स पर क्वेश्चन. कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 1.5 मिनट्स में हो जाएंगे, एंड दैट विल कॉम्पेंसेट फॉर द टाइम यू टुक द क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट हैव डन बट यू थॉट कि चलो ट्राई करते हैं. तो दिस इज हाउ, लाइक सी इट्स इजी टू से हियर, मैं खुद का भी 24 नहीं आया था बिकॉज आई डिड समथिंग हॉरिबली रॉन्ग, and I still regret it kind of. But the thing is, if you do it strategically, you will see you just need to get 8 questions right. And what is the kind of accuracy you can fall to? अगर तुमने 10 क्वेश्चन राइट कर दिए, then you have the liberty to do 6 questions wrong. Imagine कि तुम्हारा कितना वो हो गया,
3 बाई, हाँ 3/8, 3/8 तुम रॉन्ग कर सकते हो, और 8 में से 3 क्वेश्चन, विच इज अ प्रिटी गुड थिंग, लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ रूम, यू कैन जस्ट डू इट विद 62.5% एक्यूरेसी। तो उस तरह से अपने चीजों को मैप आउट करो दिमाग में, देन गो विद दैट माइंडसेट, हैव अ वेरी क्लियर माइंडसेट ऑफ व्हाट you want to do in exam. Should we have any expectations? Definitely you should have. You have worked hard. AMT के वॉक्स में एवरेज परसेंटेज 90 के हाथ, बट VRC की वजह से एंजाइटी हो रही है। ठीक है। सी, डर लगना इज नेचुरल, इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट वरी, डर लगना कोई बुरा बात नहीं है। नाउ अगेन, यूज में क्या है, अपना सारा टेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आधार, 3 फोटोज ले जाओ, वहां पे जाके देखा कि एक फोटो मिसिंग है, एक वॉलेट में रखना, एक पॉकेट में रखना, एक बैग में रखना, एक कोई अगर तुम्हारे साथ जा रहा है, पापा मम्मी, उनको दे देना, ठीक है। um, अपना खुद का ग्लू भी, कैरी योर ओन ग्लू, फाइन। उसके अलावा अवॉइड एनी काइंड ऑफ मेटल्स, और एक्स्ट्रा थिंग्स टू अवॉइड हैसल, ठीक है। इफ पॉसिबल sleep 8 hours, if possible. Now the why I'm writing if possible, because एग्जाम के पहले नींद नहीं आती, हालत खराब रहती है, so I can understand from a student perspective it's not easy to sleep, ठीक है, but if possible sleep. uh, go to exam center pretty early, but but enter when 40 minutes are left. रीजन इज कि अगर आपका 8:30 बजे का स्लॉट है, आप 6:30 बजे जाके खड़ा हो जाओगे, 7 बजे आपको एंट्री दे देगा, 1.5 घंटा आपको अंदर बैठना पड़ेगा, आप आवाज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। बाहर रुको, चाय नाश्ता थोड़ा सा करो, मम्मी पापा से बात करो, दोस्तों से बात करो, आसपास जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करो, नॉर्मल बात, ये नहीं कि भाई ये कर क्या है वो कर क्या है, नॉर्मल बात करो एंड गो टू द एग्जाम सेंटर, मतलब 40 मिनट पहले, बिकॉज यू डोंट हैव टू सिट अलॉट, बट यू आर नॉट इन अ बैड पोजिशन एज वेल। ये नहीं हो रहा कि आप 12:15 12:20 पे घुस रहे, तो आप जस्ट 12:40 पे जाके बैठो और एग्जाम देने लग जाए, और ये भी नहीं हो रहा है कि आप एकदम 10 बजे घुस गए तो आपको 12:30 बजे तक बैठना पड़ रहा है। बी इन द मिडल पाथ टू कीप योर माइंड फ्रेश, बिकॉज इट्स एक्चुअली टैक्सिंग, आई विल टेल यू। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम बहुत जल्दी चला गया था, एंड आई शुड नॉट हैव डन इट। अगेन फ्रॉम दैट आई विल कम टू दिस पॉइंट, eat light, eat light, and don't have a lot of water during your exam. भाई वॉशरूम जाने नहीं मिलेगा, और तुम उतना टाइम भी नहीं निकाल पाओगे, डोंट हैव अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग एग्जाम, eat very very light. Now what you should not do, I hope I am clear with the tools. What you should not do, don't learn something new. अभी नहीं बैठ जाना कि भाई कोई एक नया कोई एक दोस्त वीडियो भेज दिया, भाई इससे ज्योमेट्री कर लेता है, ज्योमेट्री सॉर्टेड है, तुमको ज्योमेट्री नहीं आता बट तुमको लग रहा है कि कुछ एक दो चीज पता चल जाएगा, कर लेते हैं, डोंट डू इट, डोंट ओवर रिवाइज, डोंट ओवर एनालाइज, ओवर क्रिटिसाइज। सी, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, जैसे अभी तुम कर रहे हो, अभी प्रियांश शायद तुम कर रहे हो कि दिक्कत ये हो रहा है, तुम बार बार चीजों को ओवर एनालाइज कर रहे हो, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि भाई मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो सब मत करो। डोंट लेट दिस कम इन योर पाथ टू अ गुड एग्जाम। सी, no one knows how the exam will go, no one knows how the paper will come, but if you are someone who does not enter with that confidence, you're not gonna make it.
एंटर विद द कॉन्फिडेंस, हमेशा पैट का मिस देखो, ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया इंडिया को, बट मैं एक चीज हमेशा याद रखूंगा जो उसने बोला था, there is no other happiness than seeing a big crowd go silent. When you enter that exam hall and when you come out of it, you need to make sure like you have performed in such a way that you have made a whole crowd silence. And who is that crowd? It should be first the one demon inside your mind जो बोलता था कि तुमसे नहीं होगा, दूसरा जो लोग सोचते थे तुमसे नहीं होगा, तीसरा जो सारे कैट एस्पिरेंट्स गए एग्जाम देने। आई एम श्योर जरूरी नहीं है 100% आना ही क्राउड साइलेंट करना होता है। क्राउड साइलेंट करना होता है कि जब तुमने अपने एबिलिटीज को तोड़ के परफॉर्म किया। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ऑस्ट्रेलिया, यू हैव स्ट्रेटेजी, यू इम्प्लीमेंटेड। किसी को फर्क नहीं पड़ता इंडिया 10 में 10 मैच जीत के आया, फाइनल हार गया। किसी को फर्क नहीं पड़ता जब 4 मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया लास्ट में था वो फाइनल जीत गया। सो बी वेरी 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 क्लियर अबाउट इट। ठीक है, डोंट go to your exam hall for months on the day of it. What I mean to say is अगर तुम्हारा एग्जाम हॉल दूर है, एक दिन पहले जाओ, आज जाओ। The reason why I'm saying this is, see, हो सकता है तुम्हारा इवनिंग स्लॉट हो, कोई भी स्लॉट हो, but when you travel any distance, let's say 50-40 kilometers, you the travel fatigue kicks in and you don't want to be in a situation where तुम वहां हो एंड तुम्हारे अंदर ट्रैवल फटीग भरा हुआ है। नहीं, तुमको ट्रैवल नहीं करना, एक दिन पैसा लग रहा है लगने दो, बट यू शुड गो विद अ फ्रेश माइंड। यू शुड गो कि हाँ भाई मैं एकदम चिल हूँ, मैंने अभी खाया है, थोड़ा बहुत पेट में खाना है, बाहर में मेरे दोस्त लोग मम्मी पापा है, मेरे को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा, मैंने ठीक ठाक सोया, ज्यादा नहीं सोया हो। अगर तुमको नींद आ गई तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम ज्यादा नहीं सोए हो तो ठीक है, मैंने ठीक ठाक सोया है एंड मैं थका हुआ नहीं हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट यही होना चाहिए कि मैं थका हुआ नहीं हूँ, बिकॉज इफ यू हैव स्लेप्ट लेस एंड यू ट्रैवल देन यू आर लिटरली टायर्ड and you're not prepared to go for a competitive exam of 2 hours, which will change your life. So treat this exam respectfully in a way that it is going to change your life in a certain manner, and give respect to it, give your time, energy to it today as well. Chill maro, but these are the things that you need to make sure that you don't miss out. हाँ, 2 हार दूर है, 2 हार दूर हम आई वुड से चले जाओ पहले, डोंट लाइक 2 हार दूर भी डिपेंड करता है तुम कैसी जगह पे हो अनमोल। अगर पसीना वसीना आने लग गया, तुम्हारा स्लॉट कौन सा है, सुबह सुबह का तो फिर भी चलता है, बट अगर तुम्हारा थोड़ा दूर का स्लॉट में वो तुम्हारा उसका स्लॉट है, क्या बोलते हैं ना, सेकंड थर्ड स्लॉट है, तो यू वुड नॉट वांट कि ऐसा हो। थर्ड स्लॉट देखो होता क्या है ना, थर्ड स्लॉट है तो आई एम श्योर यू विल बी अवेक बाय 12, राइट, मैक्स टू मैक्स 12 बजे जग जाओगे। यस, 12 बजे जग जाओगे, फिर तुमको थोड़ी देर तुम खाओगे, उठ के खाओगे पियोगे नहाओगे, ठीक है, ये पूजा वूजा करोगे, अगर करोगे तो थोड़ा सा रिवीजन करोगे, दोस्तों से बात करोगे जो ऑलरेडी अंदर गए हैं, तो उससे क्या होता है कि अब तुम्हारा माइंड में थोड़ा सा क्लाउड हो गया है। 2 घंटे बाद तुम निकलोगे, 2 बजे तुम घर से निकलोगे, 2 बजे भी नहीं, चलो 1 बजे तुम घर से निकलोगे और तुम 2 घंटा ट्रैवल करोगे तो तुमको 3 बज जाएगा, तुम प्रॉपर ट्रैवल कर रहे हो। तुमको थोड़ी सी एंजाइटी होगी कि फर्स्ट स्लॉट वालों का ये आया, सेकंड स्लॉट वाले जस्ट निकल के आए हैं, वो लोग रोज हो रहे होंगे, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग रोज हो रहे होंगे। तुमको रास्ते में कुछ लोग मिलेंगे, वो लोग बोलेंगे भाई एकदम, या तो एकदम अच्छा गया या एकदम गया भाई डूब गया। तो मिक्स थॉट्स होगा, तुम ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारा मेंटल क्लाउड आ रहा है और फिर तुम वहां जाओगे, तुमको फिर अंदर बैठना पड़ेगा, तुम वहां 3 बजे पहुंचे, तुम 3:30 बजे तक अंदर गए तो तुमको 4:30 बजे तक बैठना पड़ेगा। एंड मैं बता रहा हूँ जो अंदर का माहौल होता है ना, उससे ज्यादा स्लीप इंड्यूसिंग माहौल तो कुछ होता ही नहीं है। एकदम मतलब वो लोग गरम गरम करके रखते हैं जगह को, एकदम कोजी कोजी, तुमको मन करेगा भाई सो जाए, लेट जाए, गद्दा लगा दो हम सो जाते हैं। तो यू डोंट वांट कि इतना सारा फैक्टर्स तुम्हारे एग्जाम के बीच में। आई से एक दिन पहले जाओ, आज जाओ,
थोड़ा आसपास कहीं दोस्त वोस्त का घर है वहां रह लो या कहीं जगह लेके रह लो, लेकिन ट्रैवल ज्यादा मत करो भाई, 2 घंटा बहुत होता है। आधा घंटा का ट्रैवल इज फाइन, 2 घंटा इज टू मच। What if people has a lot of surprises? It will have for everyone, don't worry. मेरा लास्ट टाइम कैट में 95 आया था, अराउंड 93.8। हाँ यार प्रशांत, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छा। बस लालिया का टर्न इस लॉन्च 2020 में ज्यादा ही टफ था। तो 2021 से क्या मतलब है? यार स्लॉट का देखो, स्लॉट का तुम लोग इस तरह से कर लो। आ, हर स्लॉट में कुछ ना कुछ वो फैक्टर्स होता है, चेंजिंग फैक्टर्स। जैसे स्लॉट वन में हम लोग इस समय क्यूए बहुत इजी था बट डीआरआर कंसिडरेबली टफ था। स्लॉट टू में आई वुड से क्यूए टफ था एंड बाकी सब मॉडरेट था। डीआरआर easier था as compared to other slots, and in slot 3 VRs easy था, but QA and DRR was on the tougher side. So you don't know, but ऐसा नहीं है कि किसी स्लॉट को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा और किसी को एकदम नहीं मिलेगा। बट हाँ, स्लॉट 3 में ऐसा हुआ था कि वो ओवरऑल मॉडरेट क्यूए एंड डीएलआर था और इजी वीआरसी था, उसके चलते लोग वहां बहुत स्कोर कर रहे थे एंड इसलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा स्केल डाउन किया था। बट सी कितना ही स्केल डाउन करेगा, मेरे कुछ दोस्त लोग का तो 10-15 मार्क्स भी कम कर दिया था। बट अगेन यू सी द पॉइंट कि वहां पे उन्होंने ज्यादा स्कोर किया ओवरऑल, तो उनका ओवरऑल परसेंटाइल ज्यादा आना ही है। हो सकता है सेक्शनल परसेंटाइल में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी हो, क्यों? क्योंकि वीआरसी में लोगों ने बहुत ज्यादा स्कोर किया था। बट दैट इज द पॉइंट कि क्या बोलते हैं ना, every section has its pros and cons, and you every slot has its pros and cons, and you डोंट से कि हाँ वन में ज्यादा। वन में देखो सरप्राइजेस मिलते हैं, तो वन में क्यूए इतना इजी था। वन का डीआईएलआर डुएबल था, 1.5 सेट बन सकता था। वीआरसी मैंने देखा नहीं है। तो सी वन, हाँ आई वुड से वन हैज अ सर्टेन लैब राइट काइंड ऑफ फीलिंग कि भाई मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बट अंडरस्टैंड कि they will give you some advantages if they are putting in something new. The advantages would be they'll keep easier things for you। ठीक है, जो नया आ रहा है वो भी थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, तो कैपिटलाइज ऑन दैट। वीआरसी कट ऑफ कितना होता है मतलब भाई? 85 परसेंटाइल होता है हर जगह के लिए। अब अनलेस यू सेक, आई थिंक 75-85 परसेंटाइल है अनलेस यू हैव रिजर्वेशन। तो हाँ, आई थिंक दिस इज व्हाट डोंट you find that I don't talk to people about it. हाँ, I did this in class। ठीक है, तो ये जो लिखा है, what I wanted to say कि you don't know who is going to be the person जिससे तुम्हारा पाला पड़े, जो तुम्हारे बगल में बैठा हो, जो थोड़ा बाहर हो। तो you would not want कि आ, कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस को गिरा दे। ठीक है ना? um, एक एडिशनल टिप दूंगा विच इज आई थिंक इम्पोर्टेंट टुडे के लिए। Learn how to use on-screen calculator for DLR and Q। I can't stress enough कि मुझे कितना हेल्प हुआ था इससे। Read 5 articles today and 5 tomorrow before entering। Again, take a cold mock to keep your mind in exam zone।
but also that is not the end. There are other exams after that. So buckle up for them as well. मेरे एक दोस्त का 40 परसेंटाइल था कैट में एंड राइट नाउ ही इज सिटिंग इन एक्सेल। तो डोंट लूज होप। अगर रोड के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। रोड के नहीं बैठना, जैसा गया गया। This is all that I wanted to say. Is there anything else that you have in mind, uh, which you would like me to address, or we would call it a day? Anything you want to ask? Mm, okay, okay. I think there are not a lot of things you would like me to. अरे यार लाइव चैट आ गया। अच्छा, चलो। I think this is all. So thank you so much for patiently listening. I hope it will give you some sense of क्या बोलते हैं relaxation. It will help you last minute. And CAT exam is definitely a bit tough, but not पूरी तरह से. Go and give your best. When you come out of the hall, you should not regret. You should not feel कि मैंने enough नहीं किया. You should not feel कि ये पढ़ लेता तो हो जाता, वो पढ़ लेता तो हो जाता. Be content with yourself, and the results will follow. You have other exams incoming. Um, um, my association with Unacademy has been fruitful. I have taken some strategy sessions for CAT only in Unacademy, and I have also put videos on my YouTube channel which you can refer. I'll put up interview content as well for your referral after you crack the exam, or at least you think you'll get a good percentile after the answer key is out. Start for the interview. There's a lot left, a lot of challenges ahead, and MBA is very hard once you get inside. So cherish this journey. Trust me, when you are in MBA, you will just say one thing, भाई क्या है का journey इससे easy था. So cherish this, and trust me, this will pay off. In some sense or the other, you'll find yourself in a very good position after a few years. Thank you so much for listening to me, guys. I am really grateful, and see you soon. Good day. Thank you, Sabat.